Hello everyone, welcome to WowOS. So today we'll cover our MCQs for the 18th of May. Okay. Before we start, I would like to tell you about a new initiative which we have started from today, the ACAD initiative. If you haven't submitted your answer yet, please submit it on our website. Okay. As a starting point, जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं उन टॉपिक्स पे आप आंसर लिखना चालू कर सकते हैं और इनसाइट्स हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको मिलेंगे. ओके, सो हियर गोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. INCLU L57 which was recently in news is option A intercontinental ballistic missile, B diesel electric submarine, C indigenously designed amphibious vessel, or is it D crew capsule for Gaganyaan mission? Okay, so the answer is C. It is an indigenously designed amphibious vessel. Okay, it's a landing craft utility basically. It was commissioned at the Andaman and Nicobar Island Command, 7th landing craft utility inducted into the Indian Navy. It is indigenously designed and built by the MS Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata. Okay, so it is an amphibious vessel designed for transporting and deploying main battle tanks, armored vehicles and equipments from ship to shore. Okay, you must remember that it is a landing craft utility, INCLU L57. Okay, now moving forward. So our next question is, which of the following are among the 5 pillars mentioned for an Atmanirbhar Bharat? First is economy, second is system, 3 is demand, 4 is demography, 5 is infrastructure. Now you have to select the correct answer. Is it A 1, 3 and 4? Is it B 1, 4 and 5? Is it C 1, 2 and 4? Or is it D all of the above? So the correct answer is D, all of these above. So as we all know, Prime Minister ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का पैकेज विच इज़ इक्वल्स टू 20% ऑफ इंडिया GDP. आत्मनिर्भर भारत में ये सारे पिलर्स हैं: इकोनॉमी, सिस्टम विच इज़ टेक्नोलॉजी, डिमांड, डेमोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज अबव. एक चीज़ हमको याद रखनी है कि जब भी ऐसे ब्रॉड पॉइंट्स आते हैं तो उसमें जनरली सारे आंसर्स सही होते हैं. तो अप्रोच हमारा ऐसा होना चाहिए, जब भी कोई भी ब्रॉड पॉइंट आए जिसमें हर चीज़ कवर हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव, तो आंसर आपका वही होगा. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे इज, consider the following statements with respect to National Migrant Information System. Statement number 1, the Ministry of Home Affairs launched the National Migrant Information System. And statement number 2, it captures the information regarding movement of migrants and facilitates the smooth movement of stranded person across states. Okay, now which of the following statements is correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 or 2. Okay, so our answer is both 1 and 2. It was launched by Ministry of Home Affairs. It is built by NDMA, National Disaster Management Authority, NDMA. Okay, और ये एक्ट करता है सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, सेंट्रल रिपोजिटरी. ओके, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस. ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में ये होता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सही बता सकते हैं तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा. यूपीएससी ज़्यादातर हमेशा ट्रिक करता है, आपको कभी कभी वो गलत ऑर्गेनाइजेशन भी देता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. आपको ये ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए. ओके, दिस वन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Now our next question is, consider the following statements with respect to Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Okay, statement number 1, it aims to supplement agriculture, modernize processing and decrease agricultural waste. And statement number 2, scheme is launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Which of the statement is correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 or 2. So our answer is A 1 only. Okay, let's see here. Pradhan Kisan Sampada Yojana, it aims to supplement agriculture, modernize processing and decrease agricultural waste. It was launched by the Ministry of Food Processing. जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस गलत दी जाती हैं यूपीएससी में. इट्स अ ट्रैप. तो यू मस्ट रिमेंबर दीज ऑर्गेनाइजेशन नेम्स कि कौन उसको स्टार्ट कर रहा है. ओके, तो इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम इंक्लूडिंग स्कीम सच एज मेगा फूड पार्क्स, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, integrated cold chain and value addition infrastructure, etc. Okay, it also includes new schemes like creation of backward and forward linkages, infrastructure for agro processing clusters, creation expansion of food processing and preservation capacities. Okay, so this is not very important.
ये तो ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रिमेंबर कि आपको ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत। Statement number 1, it is the first in the series of 5 offshore patrol vehicles. Statement number 2, it has been designed and built indigenously by Goa Shipyard Limited. Okay, which of the following statement is correct? A1, B2, C both 1 and 2, and D neither 1 or 2. Okay, so the answer is C both 1 and 2. Union Defence Minister commissioned Indian Coast Guard ship Sachet and 2 interceptor boats C450 and C451 in Goa. Okay. Now here we end. Thank you.